Mata, Lawyer Go. Yes. Hare Krishna. Namayom Vishnu Padaya Krishna Pristhaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanto Swami Niti Namine Namayom Vishnu Padaya Krishna Pristhaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanto Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gaurvani Pracharine Nirvishesho Shunyavadi Pasato Deshatarine Namaste Saraswati Deve Gaurvani Pracharine Nirvishesho Shunyavadi Pasato Deshatarine Jayo Radha Madhava Jayo Kunja Bihari Jayo Radha Madhava Jayo Kunja Bihari Jayo Gopi Jana Vallabha Girivardhari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Yashodanandana Vraj Jana Ranjana Yashodanandana Vraj Jana Ranjana Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Jai Radha Madhava Jai Kunja Bihari Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityanando Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrindo Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityanando Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrindo Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jayo Jayo Prabhupada Jayo Srila Prabhupada Jayo Prabhupada
Prabhupada Jayo Srila Prabhupada Nitai Gaura Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gaura Hari Bol Nitai Gaura Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gaura Hari Bol. Hare Krishna Prabhuji. Okay. So now I can see everybody. So as I don't know, let's say I mute my phone so I can sing with the singer, because if the phone is capturing the sound, interfere in the whole thing. So you all can do the same. If your phone is mute, if your mic is mute, you can sing also, no problem. Okay. So we want to start. Mataji Kushbo, are you ready? Thank you for accepting to translate. You become very expert. I thank you so much. I see you have a new you have a new surrounding around you. Are you in a different place now? No, I am back to my home now. Okay, good. Okay, so I welcome everybody. So nice to see. I'm going to start with a prayer. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Tiname Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nivesesa Sunyavad Bhaskachara Dasatarine Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Swasadi Gaura Bhakta Vinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. All glories to the Prabhupada, all glories to the devotees engaging in the preaching movement of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Okay, so today we have, first I thank you all for coming. It's amazing. You are very determined to come every time. This is a very good sign for all of us, this wonderful association. Okay, this is a very wonderful topic. The mastermind behind everything. Hare Krishna, should I translate? Start? Yes, please. Yes. Okay. हरे कृष्ण आप सभी को आज का जो टॉपिक है मास्टरमाइंड बिहाइंड एवरीथिंग, मतलब इसका ये है कि ऐसा कौन सा माइंड है, ऐसा कौन सा मास्टरमाइंड है जो सारी क्रिया सारी एक्टिविटीज के बिहाइंड उसके पीछे कौन है। तो आज प्रभु जी उस टॉपिक पे बताएंगे। यस प्रभु जी। I like the hand gesture behind everything. No, good, good. I'm Italian. We talk with the hands. Hey, okay. So actually gives flow to me. It's good. It's an ultimate expression. So the theme today is to understand the divine intelligence guiding creation and life through the lens of Bhakti philosophy. Sorry, Prabhuji, could you please say again? No problem. Understanding the divine intelligence guiding the creation and life through the lens of Bhakti philosophy. Okay. तो अभी प्रभु जी ने बताया कि जो डिवाइन जो आध्यात्मिक है उसके पीछे का जो ज्ञान है वो कैसे, उसके पीछे क्या मास्टरमाइंड है। मास्टरमाइंड का हिंदी क्या होगा मुझे नहीं पता, और उसकी फिलॉसफी के बारे में भी बात करेंगे। वैसे मास्टरमाइंड का हिंदी क्या होगा? एनीबॉडी नोस? Mastermind, huh? What's the Hindi word for mastermind? Yeah, if anybody knows, so please tell. Asvarya Mata, you are smiling. What is mastermind? No problem. Everyone can understand. Yes, Prabhuji. Well, it must have a Hindi word. I can use the Hindi word also.
Anybody knows the Hindi word for mastermind? Bora Babu. Okay, we'll find that some other time. Okay, so Okay. Asaman buddhi. Okay. So the first thing is we have to see there is order in chaos. 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 Tricky word. There's order in chaos. You see, there is order in the universe. Correct? ओके, तो प्रभु जी ने बताया जो पूरा एक एक जो भीड़ मची हुई है उसमें प्रभु जी बताएंगे उसका जो ऑर्डर, उसका जो रिदम चलता आ रहा है उसमें जो सबसे जो पहली चीज है पूरे यूनिवर्स में, अभी उसके बारे में आगे बताएंगे। यस प्रभु जी। Nothing in the universe is random. From the movement of the planets to the heartbeat. ओके, तो अभी जो पूरा जो ब्रह्मांड है वो एक अचानक से नहीं बना है, उसके पीछे भी एक किसी की एक्टिविटी, किसी का हाथ है, किसी का हृदय है। यस प्रभु जी। Some people, they theorize that, some good people, that the atheists say there is no God, but some people say at least you can recognize there is an intelligence directive moving the material creation. There is an intelligent creation. See? ओके, तो प्रभु जी ने बताया जो कुछ लोग जो होते हैं वो अपनी थियरी, अपनी जो अपना जो ज्ञान लेके आते हैं, लाइक थियरी जो होता है वो उसमें ऐसा बताते हैं कि जो नास्तिक होते हैं वो बताते हैं कि पूरे ब्रह्मांड में कोई भगवान नहीं है, नो गॉड। और कुछ लोगों का ये कहना है कि नहीं, भगवान है, पूरा जो ब्रह्मांड बना है उसके पीछे कोई तो है। यस प्रभु जी। Okay, it said, this is from the Chaitanya Charitamrita, Madhya 1365 in the purport. Prabhupada said, not a blade of grass moves without the will of the Supreme Lord. That's a very bold statement. ओके, अभी चैतन्य चरितामृत के जो मध्य लीला है उसमें 13.65 जो है उसके परपट में श्रील प्रभुपाद ने ये बताया उसके तात्पर्य में कि एक जो घास का एक तिनका जो है, एक कहते हैं ना, एक पत्ता भी भगवान की मर्जी के बिना नहीं हिल सकता, तो वो प्रभुपाद ने इस परपट में बताया। तो ये बहुत बड़ा एक स्टेटमेंट है इसके पीछे। यस प्रभु जी। Yeah. So it says here, if there is a perfect design, there must be a perfect designer for the manifestation of this creation. एक जो पूरी एक जो कोई डिजाइन होती है, एक पूरी सुंदर कोई आकृति होती है, उसके वो एक जो बहुत परफेक्ट बनी होती है, उसको बनाने के भी पीछे कोई ना कोई इंसान जरूर होता है, वो भी कितने अच्छे से बनाता है। तो ये पूरा जो यूनिवर्स है, पूरा जो ब्रह्मांड है, वो ऐसे ही तो नहीं बन गया, ऐसे ही तो मैनिफेस्ट, ऐसे ही मतलब सबके सामने नहीं आ गया, उसके पीछे भी कोई ना कोई परफेक्ट पर्सन बहुत जरूर है। यस प्रभु जी। So today, we're going to find out, according to the Vedic version and according to the Bhakti philosophy, who this mastermind personality designer is. तो आज हम ये जानेंगे भक्ति फिलोसफी जो है, भक्ति दर्शन जो है उसके हिसाब से कि कौन है इसके आध्यात्म के पीछे, पूरा जो ब्रह्मांड है उसको बनाने के पीछे कौन है। यस प्रभु जी। So we have here some instruction in the Vedic scriptures, Vedic Shastras. One of them is Ishvara Paramaha Krishna Satchidananda Vigraha. This is the Brahma Samhita 5.1.
50th chapter, first verse. So this is Lord Brahma. He's praying and establishing Krishna as Isvaraha, Paramaha, the supreme Isvara, the supreme personality of Godhead, Sri Krishna. ओके, तो आज हम यहाँ पे जानेंगे कुछ इस हमारे जो शास्त्र है उसमें जो हमें इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं वैदिक शास्त्रों से लेंगे। उसमें से जो ब्रह्म संहिता है उसका 5.1 है, जिसमें ब्रह्मा जी ने ही प्रेयर की है, ब्रह्मा जी की प्रार्थना है भगवान के लिए, वो है ईश्वर सच्चिदानंद विग्रह, वो वाली प्रेयर है। और उसमें वो क्लियरली मेंशन करते हैं कि भगवान कृष्ण जो है वो परम पुरुष है। यस प्रभु जी। And as a side note in here, you see this coinage that Prabhupada used to describe God, the supreme personality of God. It is particularly a word used by Srila Prabhupada alone. Nobody else used before. I don't know, they still using, but this is Prabhupada establishing this translation from Bhagavan, God. Because God, in the Western sense, even Bhagavan into the Hindu sense, it doesn't fully give the meaning of the supreme personality of God. तो अभी प्रभु जी ने बताया कि श्रील प्रभुपाद ने हमें एक टर्म दिया, एक नाम दिया है, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड। ये पहली बार ही यूज हुआ है, प्रयोग किया गया है श्रीमद् भागवतम में श्रील प्रभुपाद ने। बाकी जो वेस्टर्न कंट्री, जो पाश्चात्य देश वाले लोग हैं, वो एक गॉड, भगवान, बस ऐसे ही नाम दे देते। और भगवान वर्ड जो एक्चुअली है वो हिंदू धर्म में ज्यादा यूज होता है, हमारे इंडिया वगैरह में। और जो गॉड है ये टर्म यूज होता है वेस्टर्न कंट्रीज में, लेकिन श्रील प्रभुपाद ने पहली बार सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड ये नाम दिया है। यस प्रभु। Because when we hear the supreme and personality and Godhead, 3 words, he has a whole universe of meaning there. First, the ultimate authority is the ultimate personality, is a person. And Godhead of God. You see, so these 3 words, it gives the full meaning of the personality of Godhead, Sri Krishna. अब ये जो इस नाम को जब हम सुनते हैं सुप्रीम, तो एक सुप्रीम कैसा रहता है, सबसे ऊपर है, पर्सनालिटी। तो एक ये व्यक्ति एक बता रहा है, कोई व्यक्ति है, गॉड हेड। तो ये पूरा जो नाम है 1 2 3 सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, ये 3 जो है, इससे पूरा एक मीनिंग निकल रहा है कि ये जो है इसके पीछे कोई ना कोई व्यक्ति जरूर है, और वो व्यक्ति और कोई नहीं, श्री कृष्ण है। यस प्रभु जी। Just this translation from the word Bhagavan or Ishvara in the Bhagavad Gita already give people the infused of bhakti philosophy in their heart, because they start to think in God as the supreme, as the personality, and as the Godhead. God, you see, is a person. See, just this translation. And Prabhupada established this, and nobody else did. You can look all the translation of Bhagavad Gita, you see this, the person, the God said, and the powerful God said, whatever it is, the translation Prabhupada give is perfect. Okay. अब ये जो शब्द है भगवान, ईश्वर, ये 2 शब्द है, मीनिंग इसका एक ही है। ईश्वर मतलब कृष्ण। और भगवत गीता में सबसे पहले प्रभुपाद ने जो ये वर्ड शुरू किया था, जो भक्ति फिलोसॉफी, जो भक्ति दर्शन है, भक्ति योग, इसमें जो भगवत गीता है उसमें सबसे पहले लेके आए थे। और ये एक पूरा एक मतलब एक परफेक्ट एक ट्रांसलेशन एक देता है, एक मीनिंग देता है कि इसके पीछे कोई तो पर्सन है। यस प्रभु जी। Also, as a side note, when we went in the safari in South India, I think it was this year, yes, one of the temples we visit in South India
was the temple where the Brahma Samhita was found. And, they have a very particular way of worshiping in there. And this is where Lord Chaitanya came. And at that time, he found out the book was there, and they gave either the book or they made a copy of the book and gave to Lord Chaitanya. And he took from there back to Bengal, that book, the Brahma Samhita. ओके, तो अभी प्रभु जी बता रहे हैं इनका एक्सपीरियंस जब ये सफारी में गए थे इस बार। इसी साल हुई थी साउथ इंडिया में, चेन्नई में नहीं, साउथ इंडिया में हुई थी। यस। तो वहां पे जो ये बताया जाता है कि जो ब्रह्म संहिता है वहां पे लॉर्ड चैतन्य को मिली थी, एक सही तरीके से मिली थी। फिर वो मतलब वहां से वो बुक मिली, फिर वापस से इसे लेके आए सभी के सामने ब्रह्म संहिता को। यस प्रभु जी। So also, there is the Bhagavad Gita, 9 chapter 10th verse. It says, all demigods, natural laws, and energies act under his supervision. Madhyakshana prakriti suyache satchara charam. You see, this material energy is working under my direction. भगवद गीता के 9वें चैप्टर के 10वें 9.10 में बताया है कि जितने भी देवी देवता है, जो डेमिगॉड्स कहे जाते हैं, वो उनके पास जो भी पावर है वो भगवान से ही आ रहा है। भगवान स्वयं इसमें कह रहे हैं, और मेरी ही एनर्जी की वजह से ही पूरा जो मटेरियल वर्ल्ड है वो चल रहा है। यस प्रभु जी। So, God's intelligence, the Supreme Lord intelligence, is manifesting everywhere. The question is, can we see this manifestation of his intelligence? ओके, तो ये जो भगवान का जो इंटेलिजेंस एक कहा जाता है कि जो भगवान है पूरे ब्रह्मांड में सब जगह फैले हुए हैं। तो एक सवाल उठता है कि ये सब जगह है तो क्या हम इन्हें देख सकते हैं? यस प्रभु जी। I was brahmachari for maybe 10, 12 years, preaching in the villages of India, Bengal, North India, South India. I'm proud of it. Fulfilling Lord Chaitanya's mercy. We preach a lot in Bengal. And many times, this young youth, the youth used to come, not like you are intelligent youth, intelligent design. But the youth, actually, that time was a lot of communists, So they like to poke you. So they used to come, can you show me God? This is very, standard practice for people who don't know anything about God. Can you show me God? Like he can be your maid, hey, God, come, show up to this guy here. He wants to see you, like that. ओके, तो प्रभु जी बता रहे, प्रभु जी जब ब्रह्मचारी थे, अपनी 18-19 वर्ष की उम्र में जब थे, तब वो श्री लॉर्ड चैतन्य प्रभु की कृपा से भारत में बहुत जगह उन्होंने भ्रमण किया। जैसे बताया इंडिया में, इंडिया के अंदर बंगाल में किया उन्होंने, जो नॉर्थ इंडिया है, साउथ इंडिया है, इन जगह उन्होंने भ्रमण किया। और वहां पे उनको बहुत ऐसे कोई नौजवान मिलते थे, जो यंगस्टर्स मिलते थे, और वो उनको उकसाते थे कि बताओ कहाँ है भगवान, बताओ कहाँ है भगवान। तो मतलब प्रभु जी ऐसा कहना चाह रहे हैं कि भगवान क्या तुम्हारे मतलब ऐसे कोई नौकर है, जैसे तुम कहोगे कि भगवान कहाँ है, मुझे आओ देखना है हमें, भगवान को हम ऑर्डर करेंगे और भगवान हमें दर्शन को देंगे, ऐसा नहीं होता। यस प्रभु जी। You see, Kaha Bhagavan. Everybody's there. Kaha Bhagavan. But the question is, are you able to see God? Not can you see God? No, are you able to see God? This is the question. And that's why we're here, right? We're practicing a process by which we can take the veil of Maya and we can start perceiving the Lord first in his manifestation, the mastermind behind everything. ओके, तो प्रभु जी ने भी बताया कि जैसे सब उकसाते थे, तो उसमें ये सवाल उठता है
कि क्या तुम इस लायक हो कि तुम भगवान के दर्शन कर सकते हो, क्या तुम उस स्टेज पे हो। तो हम इसलिए ही आज यहाँ पर हम इकट्ठे हुए हैं कि हमारे ऊपर जो पूरा माया का जो जाल है, या फिर हम इस कुएं में अंदर तक गिर चुके हैं, तो हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और भगवान को देखने के लिए उस लायक बनेंगे, उस जैसे हम सब यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं वैसे। और इस चीज को जानेंगे कि कौन ऐसा Well, मास्टरमाइंड है इन सारी क्रियाओं के पीछे। यस प्रभु जी, सॉरी। you see, no, okay. Human intelligence, okay. The perfect ecosystem, sun, rain, seasons, reflects divine intelligence. The intricate nature of the small manifestation of biology in our bodies, how different systems from microcells to cells to organisms, even within our body, how they interact and they process life as we know from the beginning to the very end. You see, there is intelligence there, but the intelligence is hidden. We're going to find out why, because we have to understand the mastermind, why he did what he did. अभी जो हम देखते हैं हमारे आसपास का जो पूरा वातावरण है वो कैसे है, जैसे एक एग्जांपल है, जैसे वर्षा होती है तो उसमें कैसे पूरा जो प्रकृति है उसमें सब कुछ खिल उठता है। और हम देखते हैं कि जो छोटे छोटे जो कण हैं, जो सेल्स है, छोटे से सेल्स है, फिर उससे बड़े है, फिर उससे भी बड़े, वो छोटे छोटे सेल से जो बन के जो बड़ी चीजें बनती है, वो कैसे बन रही है, उसके पीछे कौन सा मास्टरमाइंड है, कौन छुपा है उसके पीछे, वो जानेंगे आज। यस प्रभु जी। The human intelligence is only a spark of the Lord's unlimited knowledge. It's said in the Bhagavad Gita 10:41 again. This Bhagavad Gita is enough to understand the mastermind. Whatever you see of beauty, glory, and power, know that sprung from a spark of my splendor, a tiny bit spark. ओके। जो एक मनुष्य का जो दिमाग है वो जो चलता है, जैसे जैसे वो परफेक्ट है, उसके पीछे भी भगवान है। और जैसे भगवत गीता है 10.41 प्रभु जी। 10:1. ओके 10:41, yes, correct. 10:41. 10.41, ओके। तो जो भगवत गीता 10.41 है, ये बहुत है ये चीज समझने के लिए, सारे एक्टिविटी के पीछे कौन मास्टरमाइंड है। यस प्रभु जी। So, the mastermind, he did create this universe for the sake of his own glorification. I am the mastermind. I am the man. I am the boss. Krishna don't have this. When you are the boss, you don't have to say you are the boss. So, makes sense, right? So, he created this material universe for us. This is his mercy upon us. जो मास्टरमाइंड है, उन्होंने ये पूरा जो प्रकृति जो बनाई है, वो उन्होंने इसलिए नहीं बनाई है कि वो उनका ही सारी ग्लोरिफिकेशन, उनकी ही तारीफें होगी। भगवान ने सिर्फ इस चीज के लिए नहीं बनाया है, भगवान ने हमारे लिए बनाया है। ये हमें इस चीज को समझना होगा। और जो बॉस होता है उसको जरूरत नहीं है, लाइक कृष्णा जैसे बॉस है, उनको ये चीज जरूरत नहीं है कि मेरी कोई ग्लोरिफिकेशन करे, ये होगा। उन्होंने हमारे लिए ये बनाया है, ये जो भौतिक है, भौतिक वर्ल्ड जो है। यस प्रभु जी। Because his mercy upon us is that we decide to enjoy in the material world separate from the Lord. We are like a teenager that tell daddy, I'm gonna live by myself. I want to be my own person. I'm gonna get a job, I'm gonna be successful. I don't want you coddling me, restricting me and all these things. So like a naughty teenager. So he came into this material world. And go ahead. ओके। तो भगवान की हम पर ये कृपा है कि हमें ये चीज मटेरियल वर्ल्ड जो है, भौतिक जीवन जो है, हमें जीने के लिए, समझने के लिए दिया है। हालांकि ये एक एक्चुअली एक जो एक एग्जांपल बताया है, जैसे कोई छोटा बच्चा होता है, जैसे वो धीरे धीरे जैसे बड़ा होता है,
जैसे वो यंग होता जाता है, छोटा होता है तब तो वो कंट्रोल में होता है, जैसे धीरे धीरे बढ़ता है वो थोड़ा थोड़ा कंट्रोल से बाहर आता है। वो बोलता है तो अपने पिताजी से कि नहीं, मुझे अभी आपके कंट्रोल में नहीं रहना है, मैं अपने हिसाब से ही जॉब करूंगा, अपने हिसाब से ही सारी चीजें करूंगा, मैं अपना अलग वर्ल्ड जीऊंगा। वैसे ही हम भगवान, और वो अपने पिताजी से अलग हो जाता है, वैसे हम कृष्णा से अलग हो गए हैं और हम यहाँ पे इंजॉयमेंट करने के लिए आए हैं। इसलिए भगवान ने एक मटेरियल वर्ल्ड हमें सजा के दिया है, ये लो, लाइक ऐसा। यस प्रभु जी। So the parents of such teenager, they still worry about the teenager. They love the children, can help, but they cannot come too close. Otherwise they think, hey, you spying on me. That's not fair. So they go to the neighbor, they go to the friends, they go, you know, around, they look, and they try to see how the children is doing. They always worry about their children, like Krishna is worried about us, each one of us. ओके। जो माता पिता जो होते हैं, जो नौजवान जो भी बच्चे होते हैं, उनके माता पिता ऐसे उनसे बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन और वो उनकी हेल्प भी करना चाहते हैं। लेकिन जब वो उनके नजदीक जाते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि हमारे पीछे कोई जासूस छोड़ा गया है, तो वो ऐसे नहीं करते। वो पेरेंट्स क्या करते हैं कि अपने उनके फ्रेंड्स के थ्रू उस बच्चे की जानने की कोशिश करते हैं, उनके जो पड़ोसी होते हैं उनके उनके से उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो उनके बारे में वो चिंतित होते हैं। सेम लाइक कृष्णा के साथ है, कृष्णा भी हमसे बहुत प्रेम करते हैं, बहुत चिंता करते हैं, इसलिए वो अभी डायरेक्ट हम हमारे साथ हमारे सामने मतलब हमारे क्लोज आके हमारे नहीं कर सकते, हमारे हाल चाल नहीं पूछ सकते, तो वो किसी के थ्रू होते हैं, और वो किसी के थ्रू भक्त ही होते हैं। यस प्रभु जी। So the Lord created this material world. So he said, well, I cannot directly approach the living entities. They wanted the freedom. So I gonna leave the clues, I gonna leave the clues that they can find me out within this material creation if they look hard enough. और जैसे भगवान ने ये जो पूरा भौतिक संसार हमें बजो बना के दिया है, उसमें एक ऐसा है कि डायरेक्ट हम भगवान को अप्रोच नहीं, मतलब डायरेक्ट उनके पास नहीं जा सकते हैं। उन्होंने कुछ ऐसा सिस्टम बनाया है कि हम भगवान को इस मटेरियल, इस भौतिक संसार में ढूंढेंगे कुछ अलग तरीके से। यस प्रभु जी। It's just like in the Western world, at least in my country, in Brazil, used to have Eastern, called Pascua, Eastern holidays, right? It's a Christian thing. But somehow, I don't know, there is a rabbit that gives chocolate eggs, and they hide the eggs, throughout the house, the garden, everything. And the children go in there looking for the eggs, and you find the egg inside that is different, uh, things to eat and sweets and everything. It's very actually exciting for the children at that time. Okay, so it's this, you're looking for the eggs, you're very excited, you're looking under the plants and in the bench in here, over there in the tree, like that. The parents go there, they put the eggs, and then the children go try to look everywhere for the eggs. Chocolate eggs, of course. ओके। तो प्रभु जी ने बताया जैसे ब्राजील में जैसे छुट्टियां जो होती है, तो उसमें जो त्योहार वगैरह होते हैं, जो क्रिश्चियन के त्योहार होते हैं, उसमें पेरेंट्स यूजुअली क्या करते हैं, कुछ ऐसे एक्टिविटी क्रिएट करते हैं। वो जो गार्डन का एरिया होता है, उनके आसपास का जो एरिया होता है, वहाँ पे जो चॉकलेट होते हैं, एग होते हैं, वहाँ पे छुपा देते हैं। तो फिर बच्चों के लिए बहुत ये एक एक्साइटिंग एक्टिविटी हो जाती है। तो वो वहां पे जाके ढूंढते हैं, लाइक बैच के कहाँ पे नीचे है, कहीं पे ट्री के ऊपर है, कहीं पे आसपास में है। तो वो ऐसे ही एक एक्टिविटी, एक एक्साइटिंग एक हो जाता है पेरेंट्स और बच्चों के बीच में। कैसे हो गई? I remember I used to have little ones, I used to have big ones. One time I found one that's made of crystals, they're sweet, but looks like a crystal, different colors, was so fun. So anyway, the process of the Lord manifesting in this world is just like Eastern. We're looking for those sweet, beautiful eggs in the creation to find a Lord
manifest in there and connected with the Lord. Connected, how is this connected with the Lord? So it's like finding an egg in Eastern. It's a very sweet and nice realization. You see? ओके, तो प्रभु जी ने अभी यहाँ पे जो एग्जांपल दिया है, जो क्रिस्टल्स होते हैं अलग अलग, तो तो उसमें ऐसा बताते कि मेरे पास छोटा था, बड़ा था, लाइक जो बच्चे सब ढूंढ के लाते हैं एक मतलब एक सुंदर सी एक्टिविटी जो एक्साइटिंग जो एक्टिविटी जब करते हैं, तो उसमें ऐसा है कि लाइक जो स्वीट्स और चॉकलेट्स और एग्स जो ढूंढ लिए हैं, वैसे ही भगवान कृष्ण ने हमें यहाँ पे सजा के दिया है, तो हम यहाँ पर अलग अलग चीजें ऐसे ढूंढते हैं इस भौतिक संसार में। यस प्रभु जी। So, there is, I think, the 10th chapter of the Bhagavad Gita, I think a little bit in the 11th. So Krishna is saying different things. I am the taste of the water. How many times you drink water today? Did you think this is, the taste of Krishna? Did you think of Krishna? Because he explicitly said, I'm the taste of the water. And I'm telling you, in Mayapur, when it's so hot and you really dry up like a pineapple, sweet, like a completely, dry, and you drink not cold, but the fresh water, I think, oh, this is Krishna. It's relieving. It's hydratating you. It's fulfilling you. Water is life. And you drink that, you feel this is Krishna. So you were drinking the pineapple juice there or water there? No, you dry like a pineapple, Okay, achar, okay. It's like, you sweat, it's so hot, in the summer. And then you find some nice water, you drink, you think this is Krishna, pure water. You Krishna, you get hydrated, you get all this, a leaves in life by drinking the water. You see, so this is Krishna said, I'm the taste of the water, and they said all the things of the shark, of the sea creature, I'm the shark, of the mountains, I'm Everest, and he was, I'm the sun and the moon, and he's saying so many things to see him towards the manifestation of this material world. He's telling you where the eggs are, posted. Chocolate eggs, Easter eggs. Let's be clear here. तो प्रभु जी ने यहाँ पे बताया है कि जो भगवत गीता का जो 10वां चैप्टर है, उसमें भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं जो जल है, जो पानी है, उसका स्वाद में हूँ। हमने दिन भर में हम कितनी बार पानी पीते हैं, हमें पर बहुत ऐसे चांसेस होते हैं कि हम कृष्ण को याद कर सकते हैं। तो प्रभु जी ने एग्जाम्पल दिया, जब प्रभु जी मायापुर में होते हैं, जो वहाँ पे जो समर का जो समय होता है, उसमें इतनी प्यास लगती है, इतना गला सूख जाता है, लाइक जैसे पाइनएप्पल का एग्जांपल दिया है, वो कैसे पूरा सूखा होता है, वैसे गला पूरा सूख जाता है। उस समय जो पानी मिलता है और उसमें जो पानी पी के जो हमें सेटिस्फेक्शन मिलता है, तब पता चलता है कि हाँ, लाइक क्या वो सेटिस्फेक्शन, क्या वो फीलिंग है। तो उस समय भी हम कृष्णा को याद कर सकते हैं कि वाह, कृष्णा का क्या टेस्ट है, लाइक ऐसा। और जैसे और कृष्णा ने एग्जांपल दिया है कि जो पूरा एक्वेटिक्स है, लाइक जो पूरा पानी का जो पूरा समुद्र का है, उसमें जो सारे जीव जंतु, उसमें सबसे बड़ी जो शार्क है वो मैं हूँ, और जो पर्वत है उसमें माउंट एवरेस्ट मैं हूँ, और जो सन है, जो सूर्य है, जो चंद्रमा है, वो मैं हूँ। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं जो बताते हैं कि हम कृष्णा को याद कर सकते हैं इन सारे तरीकों से। और जो प्रभु जी ने पहले जो एग्जाम्पल दिया था चॉकलेट और एग्स का, जैसे पेरेंट्स उनके छुपा के रख देते थे और उनको ढूंढना होता था, उनसे उनको वो पता चल जाता है, मिलते थे उनको वो एक्साइटिंग एक्टिविटीज से। और यहाँ पे जो मटेरियल वर्ल्ड में ये स्पिरिचुअल की जो है एक मतलब झांकी दे के रखी है, लाइक जो कृष्णा ने, इन सारी चीजों से, शार्क, माउंट एवरेस्ट, सन, मून, वाटर, इन सब से हम कृष्ण को याद कर सकते हैं। यस प्रभु जी। So the mastermind, the manifest, this cosmic creation, he left clues for us to understand him and start the process to go back to him. You see, first we have to understand the mastermind. There is a mastermind. There is intelligent design. And then who is that intelligence? Who is the designer?
find out the designer, Krishna tu Bhagavan Swayam, right? And then we have a process to approach him, the mastermind of the cosmic manifestation, so we can have a personal relationship with him. ओके, प्रभु जी ने बताया जो मास्टरमाइंड है इन सारे हमारे जो ब्रह्मांड है पूरा, उसके पीछे कौन है, तो वो हम समझ सकते हैं, इस प्रोसेस को शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम जानेंगे कि ये जो पूरा यूनिवर्स है, जो पूरा ब्रह्मांड है, वो कितना सुंदर बना है। ये सुंदर बना है, इसके पीछे कौन डिजाइनर है, कौन ऐसा परफेक्ट है। जब हम जानेंगे तब हम सबसे पहले हमारा जो प्रोसेस है धीरे धीरे शुरू होगा। पहले जानना है कि पूरा ब्रह्मांड कैसे बना है, फिर जानना है कि कौन है इसके पीछे। और जो प्रभु जी ने एग्जाम्पल दिया है कृष्ण तो भगवान स्वयं वाला, फिर हम जानेंगे धीरे धीरे कि हमारा जो एक जो पर्सनल हमारा जो संबंध है कृष्ण के साथ वो कैसा है। ये शुरू हो जाएगा प्रोसेस यहाँ से। यस प्रभु जी। So the materialistic people, materialistic men and women, they claim of independence, so they try to take God out of the equation. This is old 101 playbook of the materialistic people. Let's get God out, because once the God is out, we can do very much anything we want. We can set our own laws, set our own directives, and people follow us, not following some God beyond us. See, so the first thing the materialistic do is to get God out of the system. ओके, तो आजकल जो चल रहा है इस भौतिक संसार में, जो भले स्त्री हो या पुरुष हो, दोनों ऐसे करते हैं और वो ये चीज देखते हैं कि मैं स्वतंत्र हूँ। चाहे स्त्री भी कहती है कि मुझे स्वतंत्र रहना है, पुरुष जो है वो भी कहता है मुझे स्वतंत्र रहना है। तो इस चीज से ये होता है कि वो स्वतंत्र बन के भगवान को सबसे पहले इस भौतिक संसार से सबसे पहले बाहर करना चाहते हैं। भगवान को बाहर करेंगे, फिर वो इसलिए करते हैं कि ताकि लोग उनको फॉलो करें, उनको जाने, उनकी बात माने, ना कि भगवान की। यस प्रभु जी। So, but the materialist man, the scientists, they depend on the laws of the material nature. There's gravity, DNA, design, cosmic order are not man-made. You see, Prabhupada said, the scientists can discover the laws of nature, but who made those laws? Who made those laws? You see, otherwise anything goes. You can do anything, everything, up, down, that doesn't matter. But there is laws. Certain things go in a certain way. So who set those directives? They say this is by chance, but no, I don't think so. There's an intelligent design in this. Things happen in a certain way because it's been done this way by an intelligent mastermind. ओके, जो साइंटिस्ट है, जो बड़े बड़े वैज्ञानिक है, वो भी ऐसे अगर उनका जो भी कार्य चलता है वो भी डिपेंड रहते हैं भगवान पे ही, लास्ट में डिपेंड रहते हैं। क्योंकि जो भी एग्जाम्पल जैसे प्रभु जी ने बताया है, डीएनए है, ग्रेविटी है, कॉस्मिक एनर्जी, ये सारी जो भी चीजें है, ये अल्टीमेटली वो उन्होंने साइंटिस्ट ने नहीं बनाई है, ना ही किसी अलग इंसान ने बनाई है, बनाई है तो भगवान ने ही बनाई है। तो उसी चीज पे डिपेंड रह के फिर साइंटिस्ट लोगों का काम भी उन्हीं चीजों पे चलता है। जो भी अलग अलग लॉज है, लाइक ग्रेविटी के जो 7 लॉज जो है, वैसे प्रभु जी ने बताया है। और ये सारी चीजें बाय चांस नहीं हो गए, ऐसे ही अपने मन से नहीं हो गए, इनके पीछे कोई इंटेलिजेंट माइंड लगा है और वो भगवान ही है और वही मास्टर माइंड है। यस प्रभु जी। So there is here a process of tie the living entities called the 3 modes of nature: Sattva guna, Raja guna, Tama guna. The three modes of nature. So everything acts to the 3 modes of nature. This is also in the Bhagavad Gita. Goodness, passion, ignorance. The Lord always remains transcendental. These things do not affect him. Okay? So
He empowers each living entity according to karma and desire. We have to be careful with our desire. That's why we cultivate to purify our desires in Bhakti Yoga. So, Sarvasya Shaham Riddhi Sanivisto. That's the Bhagavad Gita 15:15, right? He's in the heart is controlling all living entities. And the three modes of material nature is putting them in different lanes of the journey towards either towards the so-called independent behavior or towards Krishna, towards himself. अब ये जो प्रक्रिया जो यहाँ पे शुरू हो जाती है इस भौतिक संसार में हमें बांध के रखने की, तो वो तीन चीजों से होती है, तो तीन गुणों से होती है, हालांकि सत्वगुण, तमोगुण और रजोगुण. गुडनेस, इग्नोरेंस एंड व्हाट वाज दैट प्रभु जी? गुडनेस, इग्नोरेंस एंड आई फॉरगेट इट, लास्ट वन. Passion. या पैशन. या इन तीन चीजों से माया ऐसे हमें बांध के रखती है इसमें, और ये भगवत गीता के 15.15 में दिया है. और ये हमें कैसे और ये जो होता है वो सिर्फ हम जो जीव है हम पर ही इफेक्ट होती है, भगवान पर ही इफेक्ट नहीं होती. भगवान इन थ्री मोड्स में नहीं बनते हैं, और ये हम बनते हैं हमारे कर्मों से और हमारी इच्छाओं से, और हमें इसी चीज पर काम करना है कि हमारा इस चीज को प्योरीफाई करना है, इस चीज को, और इसीलिए हम भक्ति योग में यहाँ पर हम लगे हैं. यस प्रभु जी. So, in the human life, we should have cooperation with the mastermind, not competition. Because how can you compete with the mastermind? You're bound to lose. That's like in casino. You're bound to lose. Some people had to game to give the illusion that you can gain. They actually gain, they make some money, but most of the people, they lose. The casino is making money, otherwise they would close the business, right? So we're not going to compete with the Lord. We want to, cooperate with the Lord, with his will. ओके. अभी यहाँ पे जो बताया, हमारा जो मनुष्य जीवन जो है इसमें हमें भगवान जो है, जो हमारा मास्टर माइंड है, उनके साथ हमें कोऑपरेट करके, मतलब उनके साथ मिलके चलना है, ना कि उनसे हमें कोई रेस लगानी, कोई कंपटीशन, कोई ऐसा करना है. अदरवाइज हम उस चीज को हम खो देंगे. कंपटीशन करेंगे मास्टरमाइंड से, कंपटीशन करना गलत ही है. लाइक प्रभु जी ने एक एग्जांपल दिया है, जो कसिनो जो होता है, अगर किसी को नहीं पता तो थोड़ा सा इजी लैंग्वेज में बता दूं, जो जुआ वगैरह जो खेलते हैं लाइक दैट होता है, उसमें हम जो कंपटीशन लगाने जाते हैं वहां पे हम हमारा पैसा गवाते ही गवाते हैं, और जो जिसको जो खिला रहे होते हैं वो अपना पैसा कमा रहे होते हैं. तो यहाँ पे एग्जाम्पल यहाँ पे सेट हो रहा है, हमें भगवान के साथ कोऑपरेट करना, करके चलना है, उनकी जो इच्छा है उनके साथ चलना है, ना कि उनसे हमें विरुद्ध होके कोई कंपटीशन करना है. यस प्रभु जी. So Bhakti Yoga means to act under divine direction, not acting under mental concoction. That is the problem, because the mind can only see so far. But under the direction of the Lord, he sees everything. Sometimes you think this is difficult, but the Lord knows at the end you come out of the difficult and you get in a good path. You're going to get in a good situation. But sometimes you under mental concoction, you think, no, this is a good thing, but you're not going to the right direction. It looks now good, but then, well, it's not so good, a little bit ahead of time. So the devotee, he cooperates with the divine will, not with his mind. जो भक्ति योग जो है ये हमें बताता है कि हमें कैसे कार्य करना चाहिए. भगवान की जो इच्छा है उसके अंदर रह के, उस चीज के साथ रह के हमें कार्य करना चाहिए, ना कि हमारा खुद का दिमाग लगा के करना चाहिए. यहाँ पे एक एग्जांपल बताया प्रभु जी ने, मतलब छोटा एग्जांपल बताया कि हमें कभी कभी ऐसा लगता है कि हम बहुत बड़ी डिफिकल्टी में, बहुत बड़ी परेशानी में है, लेकिन भगवान को पता है कि ये इसमें से निकल जाएगा, इजी है, हो जाएगा. यह तो तभी पता चलेगा जब हम भगवान के साथ मिलके चलेंगे. और ऐसा ही चीज, ऐसा ही उल्टा एग्जांपल आता है, कभी कभी हमें लगता है कि हाँ मैं बहुत सही रास्ते पे चल रहा हूँ, ये चीज मेरे लिए बहुत सही है, लेकिन भगवान को पता है कि ये चीज मेरे लिए गलत है. और ये चीज हमें तभी पता चलेगी जब हम भक्ति योग में होंगे. और जैसे जो डिवोटी, जो भक्त होते हैं,
वो भगवान के साथ कोऑपरेट करके चलते हैं, उनके साथ मिल के चलते हैं, तो उन्हें इन चीजों का ज्ञान हो जाता है। यस प्रभु जी। So Prabhupada here is saying the duty of the leading entity is to serve the Supreme Master, not to compete with him. See, he makes a distinction. So to serve the Supreme Lord, we have to have honesty and be humble. You know, be humble by understanding our position is not to control, but to serve, to serve the Supreme, to cooperate with the Supreme will. And that gets the blessings of the Lord upon us. Who is going to bless a arrogant person? Who is going to bless someone is competing against you? How are you going to bless that person? You see? So we have to be on the side of Krishna, not in the competition with Krishna, because it's a losing proposition. ओके, अभी श्रील प्रभुपाद ने जो हमें बताया कि हमारा जो मनुष्य जीवन है उसका क्या कर्तव्य है, कि भगवान की हमें सेवा करनी है, ना कि हमें भगवान के साथ कोई कंपटीशन करना है। और वो हमारा जो नेचर, हमारा जो ये गुण है वो कैसे आएगा? दो तीन चीजें बताइए। जब हम ऑनेस्टी रखेंगे, हम जब सही रहेंगे, और जो हम्बल रहेंगे, हम्बल का हिंदी क्या होगा मुझे नहीं पता, सॉरी। और ये चीज हमें कैसे करना है कि इस चीज को हमें हमारी पोजीशन समझनी, कि हमारा क्या वैल्यू, सॉरी, हमारी क्या पोजीशन है यहाँ पे, ये चीज हमें बताएगा हमारी ऑनेस्टी और हमारी हम्बलनेस से। और ये जब हम करेंगे तब हमें ब्लेसिंग्स मिलेगी। ब्लेसिंग्स उन लोगों को नहीं मिलती है जो भगवान के साथ कंपटीशन करेंगे, कोई जो कहते हैं एक जो अपना घमंड लेके चलता है या फिर कोई कंपटीशन लेके चलता है, उनको कोई ब्लेसिंग्स नहीं देगा। और ये हम हम्बलनेस और ऑनेस्टी के साथ चलेंगे, भगवान की विल के साथ चलेंगे, तभी हमें ब्लेसिंग्स मिलेगी। और हमें भगवान के साथ, कृष्ण के साथ कंपटीशन नहीं करना है, कोऑपरेट करना है। यस प्रभु जी। It's just like if you go to a museum and you see a beautiful painting, very well done. You know, you can have some feelings that come from this painting to your heart. But the first thought should be, who did this painting? And who is this person that did this painting? You know, I want to know his life. I want to know how he grew up. I want to know how he became a painter, how he did this, what he was thinking when he did this. You know, did he wrote something about it? You want to know about the person that did the painting to understand better the painting that is in front of you. You see, the collection of this artist. Okay? ओके, अभी प्रभु जी ने एक एग्जांपल बताया है, उदाहरण बताया कि हम जब म्यूजियम में जाते हैं तो कभी हमें ऐसी बहुत सुंदर सी कोई पेंटिंग दिख जाती है, तो हम वहीं पे रुक जाते हैं और उस चीज को देखते हैं कि कितनी सुंदर बनी है। और हमें अंदर से फीलिंग आती है कि इतनी सुंदर है, किसने बनाई है, कौन होगा ये बनाने वाला। हम उस पर्सन के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं कि वो इंसान इसके पीछे उसकी माइंडसेट, क्या थिंकिंग रही होगी, कैसे उसने बनाया होगा, कैसे वो इंसान मतलब उस इंसान के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, कैसे उसकी जर्नी रही, कैसे वो बड़ा हुआ, कैसा उसका खान पान, मतलब ऐसा थोड़ा सा एग्जाम्पल है। और क्या इस पेंटिंग को बनाने के पीछे क्या उसकी मानसिकता रही, क्या उसने कुछ लिखा होगा इसके बारे में। तो ऐसे ये एक जो चीज होती है, हम उसके पीछे जो जानने की कोशिश करते हैं, ये इससे हमें हमारा माइंडसेट ऐसा हो जाता है कि हम उस पेंटिंग को और उसके पीछे उसके भाव को और अच्छे से जान सकते हैं। क्या प्रभु जी? This is what we do. The process of bhakti yoga. By chanting, hearing, and serving, we perceive the mastermind intelligence personally. It's a personal activity. You see, that's why we chant. That's why we do what we do. Because we're not doing just internal, let's say, cultivation in the spiritual life. We see how the material creation around us, around where we live, the people we deal with, we become extremely observant of the reasons the people do what the things they do, and we see Krishna acting in the heart of all living entities.
अभी जो प्रभु जी ने एग्जांपल बताया, we start to perceiving the mastermind. Sorry. no, अभी जो भक्ति योग है उसमें हमारी जो कुछ क्रियाएं है, जैसे हम भजन करते हैं, चैंटिंग करते हैं, हियरिंग श्रवणम करते हैं, कीर्तनम करते हैं, ये कुछ जो एक्टिविटीज है इसको हम क्यों करते हैं? ये जानने के लिए, जो हमारी जो पर्सनल एक्टिविटीज है ये हमें भगवान को जानने के लिए करते हैं। ये हमारे ऐसा नहीं कि हम बस अपने ही अंदर कुछ ऐसे जानने की कोशिश कर रहे हैं। इससे हम समझ सकते हैं कि भगवान का हमारे साथ क्या रिलेशन है, और धीरे धीरे हमें ये भी पता चलता है कि हमारे साथ हमें कैसे किसी के साथ डील करनी है, हमारे आसपास चीजें कैसे चल रही है, कोई पर्सन हमारे साथ कैसे बिहेवियर कर रहा है, कैसे क्या एक्ट हो रहा है। और तब हम इन सारी क्रियाओं की, जो चैंटिंग, हियरिंग, श्रवणम, कीर्तनम, अर्चनम जो है, इन सारी क्रियाओं से हम समझ सकते हैं कि उन सब लोगों के हृदय में ही भगवान है, और वही सब सारी क्रियाएं करवा रहे हैं। यस प्रभु जी। You see, we should always be looking for the mastermind. So the process is to reconnect us with the mastermind. He's already manifesting himself in the creation. It's all around us. But are we seeing him? Are we deeply seeing him? How much of this deepness are we seeing? But we have a feel in the heart. We have something growing there. And the more we practice devotional service, the more you see the Lord acting in our lives and the life of the people around us, even into the universe around us, our manifestation of the material life around us, of the material, there is trees, parks, rivers, and there is so many things manifesting, and that is just like what is that? Prahlad Maharaj, Hiranyakashipu, he said at one point, right? He said, "What is this Vishnu, my enemy? He's hiding. He is afraid of me." You see, so he's hiding. You see, just like Krishna is hiding. He's hiding the universe. It's the mastermind. He's giving clues. He's hiding, but he's not just running away. It's because we want to be independent. That's why he's not showing personally to us unless we start to see him. So wonderful. Okay. तो प्रभु जी ने बताया कि हमें जो मास्टरमाइंड जो है, जो भगवान है, उनको हमें हमेशा हम देखते रहते हैं कि कौन है इसके पीछे, कौन है उसके पीछे। तो हमें रिकनेक्ट होना, मतलब फिर से हमें समझना है। हम पहले तो कनेक्शन था ही, लेकिन बीच में भी कनेक्शन टूट गया है, तो हमें रिकनेक्ट होना है फिर से। और इन सारी क्रियाओं से करते करते हम अंदर देखते हैं कि हम हमारे अंतरात्मा में देखते हैं, हमारे आसपास में हम देखते हैं कि भगवान हम कहाँ है ऐसा। और ये सारी क्रियाएं करते करते हमें धीरे धीरे समझ में आता है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहते हैं भक्ति योग में, वैसे वैसे हम इन सारी चीजों को समझते रहते हैं। जैसे हमारे आसपास में जैसे कोई नदियां बह रही है, जो नेचर है, प्रकृति है, वो सब भी देख के हमें समझ में आता है कि अच्छा, इनके पीछे भगवान है, कृष्ण है। और जो एग्जाम्पल बताया है, उदाहरण बताया, जैसे प्रहलाद महाराज का, जैसे वो जब भक्ति कर रहे थे तो उनके जो पिताजी थे हिरण्यकश्यप, उन्होंने कहा, कहाँ है तुम्हारा विष्णु, कहाँ वो छुपा बैठा है? लेकिन भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण कहीं पे छुपे नहीं है, वो सभी जगह समाये हुए हैं, कहीं छुपे नहीं है, वो भागते नहीं है कहीं पर भी, वो हम आसपास में ही रहते हैं। वो हमसे ये छुपने का जो भगवान का जो है, वो क्यों हमसे छुपे है? क्योंकि एक्चुअली वो छुपे नहीं है, वो हम यहाँ पे इंजॉय करने आए हैं, इसलिए भगवान हमें ऐसे लाइक रह के देख रहे हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। यस प्रभु जी। So here we have two people. One is a child, 6 years old. The other one is a very mature man with lots of intelligence and power. And he says to this child, "Where is this person that you talk so much? Because I don't see him anywhere. I'm very powerful. I can see everything." And Prahlad Maharaj, what he said, "My dear father, Lord Vishnu is everywhere. He is in the trees, in different places in the universe. He's even within your own heart." That makes him really mad. And
that's when he become very upset. And he said, well, is he in this pillar? He has to challenge. You see, no, there's two people here. Before we go into the pillar, there's there is two people. One is seeing Krishna everywhere. One is not seeing. It's the same here in this material world. Devotees are seeing to a certain extent. We sing. We're like the Prahlad gang. And the other one is a little bit of the Hiranyakashipu. They cannot see. They cannot see. But the two are there at the same time. One was seeing Krishna everywhere, one was not seeing at all. So he does the ultimate sacrifice. He challenged, is he here in this pillar? Because if he's here in this pillar and I break this pillar, I'll break the fate of my child, and he will convert him to be a demon like me, Papa. ओके, तो प्रभु जी ने यहाँ पे एग्जाम्पल बताया है, एक उदाहरण वही है जो प्रहलाद महाराज हिरण्यकश्यप का है कि एक जो 6 साल 5 और 6 साल का एक जो बच्चा है और एक जो बहुत ही ज्ञानी पुरुष है जो हिरण्यकश्यप को प्रेजेंट करता है, इन दोनों के बीच में बात होती है। जो प्रहलाद महाराज है, जो 6 साल का बच्चा है, वो बताता है कि भगवान हर जगह है, हर कण कण में है, पूरी यूनिवर्स में हर जगह पर है। और जो हिरण्यकश्यप है वो कहते हैं कहाँ है तुम्हारे भगवान? फिर प्रहलाद महाराज फिर से कहते हैं वो सारे वृक्षों में है, पूरे ब्रह्मांड में है, मेरे और आपके हृदय में भी है, भगवान हर जगह पर है। हिरण्यकश्यप फिर वो चैलेंज करते क्या इस पिलर में भी है? तो ये एक फिर वो चैलेंज करते हैं क्या इस पिलर में भी वो है? तो ऐसे ही एक आजकल जो हम देख रहे हैं भौतिक संसार में, ऐसे ही एक गैंग, एक दो भाग में बढ़ गया है। लाइक जैसा एक प्रहलाद गैंग है जो भगवान के बारे में सब कुछ बता रहे, जो डिवोटीज है, और जो हिरण्यकश्यप है जो एथिस्ट, जो नास्तिक लोग है, वो एक ऐसे दो गैंग में ऐसा बट गया है। फिर फाइनली में जब हिरण्यकश्यप ने चैलेंज किया कि मैं इस पिलर, क्या तुम कहते हो इस पिलर में भी भगवान है, तो मैं इस पिलर को तोड़ दूंगा, तुम्हारे विश्वास को भी मैं तोड़ूंगा। लाइक ऐसा हो गया था। यस प्रभु जी। So next time somebody challenge you, can you show me God? You say, well, I'm Prahlada gang. I can see it. And you, I don't know what gang you are, but you cannot see. But I can make you see. Right? ओके, तो अगली बार से अगर तुम्हें कोई भी ऐसा इस चीज का चैलेंज आके करे कि क्या तुम मुझे भगवान बता सकते हो, तो उन्हें कहना हाँ हम प्रहलाद गैंग से है, हम तुम्हें वो रास्ता बता सकते हैं कि तुम भगवान देख सकते हो। यस प्रभु जी। So, in closing reflection here, we're almost 1 hour. I don't want to keep you away from your, meals and whatever break. So, the idea is the more we recognize the divine design, the mastermind behind the material creation, the more peaceful and purposeful life become, more enriched, more full of great treasures that we can go and find and discover in our heart. Okay, so the more we recognize the divine design, the mastermind behind everything, the more peaceful and purposeful life becomes for us. What Prabhu you said, peaceful and positive? Peaceful and purposeful. Purpose. अच्छा, purposeful. Okay. Yes. Okay. तो आज का जो पूरा हमने लेक्चर देखा है, उसके पीछे एक जो मॉरल, एक ज्ञान जो है वो ये है कि हमें समझना है पूरे कौन मास्टर माइंड है, कौन वो दिव्य शक्ति है जिसने ये सारी चीजें बनाई है, शांति, वो उसके पीछे क्या उद्देश्य है, क्या पर्पसफुल जो प्रभु जी ने बताया कौन है वो, उसे समझना है उन सारी चीजों के पीछे का। यस प्रभु जी। To finalize the mastermind creation of the Lord Sri Krishna, I will leave you with a study, since you are all students, very intelligent, from the Prahlada gang. I'm gonna quote some of the astrobiologists and planetary scientists. Sound very complicated, but simple. People study planets and stuff like that.
Should I translate this thing? Yes, I'm going to go very quickly so we can finish, okay? Okay, yeah. Okay. तो प्रभु जी ने कहा कि अंत में हम यहाँ पे हमें देखेंगे कि जो मास्टरमाइंड है, ये सारी क्रिएशन, सारी जो प्रक्रिया है पूरे ब्रह्मांड के पीछे, वो और कोई नहीं, भगवान स्वयं श्री कृष्ण ही है। और अभी जो हम देखेंगे कि जो प्लैनेट्स है और जो लोग इनके पीछे इनके बारे में पढ़ लेते, समझ लेते, उसके बारे में अभी प्रभु जी कुछ कोट्स देंगे, लाइक कुछ लाइन बताएंगे शॉर्ट में। यस प्रभु जी। So there is a concept. It's called the habitable zone. It was developed by scientists studying planetary habitability. Which planet can be with people? Okay, this is by NASA. It's called the Exoplanet Exploration Program, and it's a true study. Okay, so they have researchers like this guy, James Casting, is Penn State University. I hope that you understand this, okay? So there's a landmark paper from this guy, Castings. It's called the Icarus 1993, defined the circumstellar habitable zone. What, in other words, they're saying that this is roots in the earlier astronomical thought, even modern astrobiology, like Carl Sagan. What that means is that the Earth lies in a precisely balanced position. This you can translate. Precise, balanced position, Earth. ओके ओके। तो प्रभु जी ने यहाँ पे बताया, जो साइंटिस्ट है, हम उनके पीछे जो नासा ने बताया है उसके पीछे के कुछ कंसेप्ट समझेंगे। जैसे जो जेम्स कैप्टन जो है, इन्होंने कुछ रिसर्च वगैरह किया था, तो इन्होंने फिर समझा था 1993 में इनके पीछे इन्होंने रिसर्च किया था। प्रभु जी, कैन यू प्लीज टेल मी अगेन दैट व्हाट वाज ही फाउंड जेम्स कैप्टन in 1993? What What he researched on in 1993, James Captain? Well, the Icarus, okay, Icarus paper is defined as circumstellar habitable zone. This paper established the Earth that is so balanced that if it's slightly closer to the sun, water would evaporate, atmosphere would overheat, and we would be in 100 times Mayapur summers. No ice cream. Okay. Very hot. तो अभी जो एग्जांपल नहीं, सॉरी, एक रिसर्च का है कि ये कंसेप्ट है, इसके पीछे बताया कि 1993 में उन्होंने ये रिसर्च किया था कि जो हमारे जो पृथ्वी है और जो सूर्य, इसके बीच की जो दूरी बनाई गई है वो एकदम सही तरीके से बनाई गई। अगर वो थोड़ा भी इधर उधर कुछ हो जाएगा तो यहाँ पे जो समर जो है, जो गर्मी है, वो इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी। जैसे एग्जांपल बताया, मायापुर में जैसे बहुत ज्यादा गर्मी हो जाएगी, तो उसकी 100 गुना ज्यादा गर्मी बढ़ जाएगी, तो हम उस वे में नहीं रह सकते। तो जो पृथ्वी और सूरज के बीच का जो डिस्टेंस है वो एक सही तरीके से बनाया गया है। और जो कार्ल सैगन जो है, एक और दूसरे साइंटिस्ट है, उन्होंने ये बताया कि जो अर्थ जो है, जो पृथ्वी जो है, वो टिकी हुई है, एक सही बैलेंस वे में टिकी हुई है, सही तरीके से। यस प्रभु जी, I tried to explain. It's good. If the Earth is too close to the sun, we fry our heads. If the Earth is too far away from the sun, we freeze our behinds, and life cannot be sustained. Everything freezes. If it's slightly far from the sun, it's slightly close to the sun. Just slightly. That means the Earth is situated perfectly in this way of going around the sun or going in its own planetary motion. Okay. अभी यहाँ पे जो अर्थ पृथ्वी है, वो थोड़ा सा भी अगर सूरज के, उसकी जो भी सही डिस्टेंस है, अगर थोड़ा भी सूरज के अगर पास चली जाएगी तो हम जैसे तल से जाएंगे, एक जो
पकौड़े हम जो तलते हैं लाइक वैसे हम पक से जाएंगे, इतना ज्यादा हो जाएगा वो। अगर चांद के भी अगर हम थोड़ा सा ज्यादा और नजदीक में अगर बढ़ जाएगा हमारी पृथ्वी, तो हम इतने ज्यादा ठंडे हो जाएंगे कि हमारे कुछ एक्टिविटी जो है वो हम कर ही नहीं पाएंगे हम। तो ये बहुत एक सही बैलेंस पे बनाया गया है। क्या प्रभु जी? Perfect balance. हाँ, यस, परफेक्ट बैलेंस बनाया गया है इस सबके पीछे। Balance बहुत अच्छा. So this fine tuning led some scientists and theologians to discuss this called the anthropic principle. Forget about this word. It's the idea that universe seems designed for life. See, this balance is so perfect that it has to be designed for life. It's being an intelligent design that put this in such a way that life is developing in very much way. ओके, अभी एक जो प्रिंसिपल जो बताया था उसको कुछ अलग सा नाम था यहाँ पे, तो उसके पीछे का ये कंसेप्ट है, जो पूरा जो ब्रह्मांड बनाया गया उसको इतने सुंदर तरीके से उसका डिजाइन बनाया गया है कि यहाँ पर हम लाइफ, हम जो जीवन है हम जी सकते हैं यहाँ पे। और बहुत इंटेलिजेंट डिजाइन है जो भगवान ने बनाया है, और धीरे धीरे हम यहाँ पे चीजें क्रिएट कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, वो हो रही है, विकसित हो रही है, विकास जो करता है। यस प्रभु जी। So, in the conclusion is that in the Bhagavad Gita 9:10, it said everything is moving under his supervision. He is the cause of all causes, like in the Brahma Samhita. So he is the mastermind. Supervision means mastermind, that he creates for a particular purpose, which is for us to have a little freedom here, and left clues for us to find out about him without him have to come and expose himself and break our illusion that we're not ready for. So Bhakti Yoga is simply to make us grow our visionary power to break the illusion of Maya and be able to see the Lord in the little and in the big things of the universe, ultimately in our own hearts because of devotional service. ओके, Yeah! अभी जो कंक्लूजन है आखिरी का, उसमें ये बताया कि जो भगवत गीता के 9.10 में बताया कि जो मास्टरमाइंड है, और मास्टरमाइंड कौन है ये भगवत गीता में बताया गया, और साथ ही साथ ब्रह्म संहिता में भी बताया गया है कि एक ये हमारा जो उद्देश्य है भगवान का, ये मटेरियल वर्ल्ड जो पूरा है, भौतिक संसार है, वो क्यों बनाया है, ताकि हम भगवान को समझे, क्योंकि हम भगवान से बिछड़ गए हैं, और उनको हम समझे। और भक्ति योग से ये हो सकता है कि जो इल्यूजन जो माया है उसे हम तोड़ सकते हैं। भक्ति योग इस चीज लिए हेल्प करता है, और हमें एक वो विजन, एक ज्ञान दृष्टि मिलती है कि हम इन चीजों से, इस माया से परे निकल के बाहर, माया से को तोड़ के बाहर निकल के फिर भगवान को हम समझे। इसलिए ये भौतिक संसार बना है। या प्रभु जी, done. So tomorrow, everybody's going to go out of the house and people ask, where are you going? You're going to say, I'm going to look for eggs. Vegetarian eggs, actually Krishna eggs. And I want to see Krishna in everything, starting with the water they're going to drink. I'm going to think in Krishna, the taste. Krishna didn't say the water is me, that the taste of the water is me. And the taste of the water is satisfaction. And satisfaction is what we're looking for. Anandamayo Vyasa, the living entity is always looking for satisfaction. And the ultimate satisfaction is what? It's Krishna. You see, when you, not just Krishna standing there, it's a relationship with Krishna, because the relationship is sweet. You know, now, Krishna is very kind. He gives us relationships in the material world, but we take otherwise and we suffer. But some relationship we can see, you know, like mother and the child. You see, that love is pure to a certain extent. Okay, love between the parents and the child, love between
spouses, love between, yes, father and son, mother and son, siblings, parents and cousins, families. There's love in there. This love is so important. Nobody is on one island. Everybody is interacting. You see, so we can see how love motivates us. You see, that the love we're looking to motivate us is the love of the mastermind, because he's looking for us. He's looking for us to go back to his kingdom. He can't wait. There'll be a big party in there. Big prashadam. Okay. या अभी प्रभु जी ने बताया कि जैसे आज हमने ये सारी क्लास हमने ली है, यहाँ पे सुनी है, और जैसे हम कल जैसे दूसरा दिन होगा हम जाएंगे अगर बाहर, तो अगर कोई हमें पूछे कहाँ जा रहे हो, तो हम उन्हें कहेंगे कि हम एग्स ढूंढने जा रहे हैं। एग्स वो नहीं, वेजिटेरियन, लाइक जो कृष्णा ने हमें जो दिया है। और वो हम समझ सकते हैं जैसे जो जल है, हम जल को जो ग्रहण करते हैं, पीते हैं, और उससे हमें जो संतुष्टि मिलती है, जो सेटिस्फेक्शन मिलता है, वो उससे फीलिंग से हम समझ सकते हैं कि कृष्ण ने जो कहा है भगवत गीता में, उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं जल हूँ, मैं पानी हूँ। उन्होंने कहा जो जल का जो स्वाद है, जो टेस्ट है, वो मैं हूँ। तो जो सेटिस्फेक्शन मिलेगा उसी से हम समझ सकते हैं। वेट, सॉरी। और एक्चुअली में हम यही फाइंड कर रहे हैं, यही ढूंढ रहे हैं कि संतोष हमें कहाँ से मिलेगा, कहाँ से हमें वो शांति मिलेगी। हम एक्चुअल में यही चीजें ढूंढ रहे हैं, और वो ही हमें मिलेगी भगवान कृष्ण से ही हमें मिलेगी। हमारा वो जब उनके साथ हमारा उनके साथ जो रिलेशन बन फिर से जो रीडेवलप फिर से हो जाएगा, तब हम इस चीज को समझेंगे। और आजकल जो हम भौतिक संसार में जो देखते हैं, अलग अलग जो रिलेशन है, जैसे एक माता का उस बच्चे के साथ है, एक हस्बैंड का अपनी वाइफ के साथ है, अपने कजिन्स के साथ जो है, अपने जो जैसे शादी वगैरह हो जाती है, जो हस्बैंड वाइफ होते हैं उनके साथ जो रिलेशन है, हम इसमें हम क्या ढूंढ रहे हैं कि हमें वो सेटिस्फेक्शन मिले, वहां पे जो प्यार है वो ही इम्पोर्टेंट, वही हमें समझना है। और ये एक उदाहरण है कि भगवान कृष्ण भी हमसे यही चाहते हैं। और भगवान कृष्ण अब यहाँ पे इन सारी चीजों से हमें बता रहे हैं, एग्जाम्पल है। और वहां पे भगवान कृष्ण जो है, भगवान का जो संसार है, लाइक जो गोलोक है, वहां पे भगवान हमारा इंतजार कर रहे हैं। यस प्रभु जी। So, finalizing, Krishna puts love in the world so we can experience love even in the material world. So we know when we meet him, we know what love is, so we can move the love towards the mastermind. You see, it's not the love that we can enjoy here and be narcissistic, in being materialistic, in being enclausurated just for us. No, he just teach us what love is. Everybody loves their mom, their pop. It's my brother, my sister, my family, friends. The love is there, so we know what it is, and when we see the mastermind, we can direct the love towards him, because that's the origin where all this love came from. Okay, so after the translation, I'll take some questions, one or two. I know you all know, oh my God, times fly. Okay, I take one question or two maybe. Okay, I thank you, Kushbo, for being there. You're getting better and better every day. Thank you so much. I pray to Krishna to give you so much blessings. And we're ready for some questions. You write it quickly, I answer, and then we can. And don't forget to give a feedback. Just tell me how you like, you don't like, if you're bad, you can tell you're a bad egg, and then I understand. Okay. ओके, तो प्रभु जी ने यहाँ पे बताया, जो फाइनल ये है यहाँ का ट्रांसलेशन, कि कृष्ण ने जो यहाँ पे हमें मटेरियल वर्ल्ड में, भौतिक संसार में जो ये सारे जो हमें संबंध दिए हैं, माता पिता का दिया है, भाई बहन का दिया है, हमारे दोस्तों का दिया है, ये एक उसमें जो प्रेम है, एक एक एग्जाम्पल है, एक उदाहरण है समझने के लिए, कि हम जब, ये उदाहरण ऐसा है कि जब हम भगवान की तरफ जाएंगे तो वो हमारा प्रेम भगवान के तरफ मतलब बहुत ज्यादा है। और ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है, ये मटेरियल एक लिमिटेड है वहां का, तो हमारा जो प्रेम है भगवान के साथ वो अनंत तक है। और जो मास्टरमाइंड जो है भगवान कृष्ण है, ये प्रेम की शुरुआत वहीं से हो रही है,
आज हमारे हमारे जो भौतिक संसार में हम जो भी प्रेम देख रहे हैं, उसका अल्टीमेट ओरिजिन जो शुरुआत है वो भगवान कृष्ण है, वही मास्टरमाइंड है। तो आज का सेशन यहीं पे खत्म होता है, और अभी कुछ क्वेश्चन आंसर लेंगे। आज का टाइम तो प्रभु जी ने कहा है कि थोड़ा लेट हो रहा है, तो कोई एक या दो क्वेश्चन लेंगे। और फीडबैक देना मत भूलना, कैसा जैसा भी लगा है आपको, जैसा भी नहीं बहुत अच्छा गया है तो जरूर बताना। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, हैंड रेज करके या फिर चैट बॉक्स में लिख के। How do you say question? Kushna? या प्रश्न। Prashna. Okay, that's very Sanskritic. Okay, who's gonna raise the hand? किसी का कोई प्रश्न है, कोई हाथ हैंड रेज करके, आज के Kud- सेशन से या फिर बाहर से कुछ। Kudip, is that you raising the hand, or you just picking up something from the top? ओके, कुलदीप प्रभु आपको पूछ रहे हैं कि आपने हैंड रेज किया था सवाल पूछने के लिए। ही इज टेलिंग नो। Okay, so I thank you all. Thank you so much. Write, write feedbacks. I like to hear from you because I'm talking here. Kushbu is there. She's working so hard. Thank you so much. And then all of you in there is just hearing, but it's nice to hear. Because this is a personal, podcast. So I like to hear from you all. You can ask things, talk, and give the feedback of the podcast here. And I feel enthusiastic in doing also. I am also a human being, and I like to hear that people have to say. Okay. Thank you so much.